Dear students, myself Indu Sharma and I have brought a lesson for all of you in English translation of Netaji ka Chashma. Students, what is the meaning of country? And those who love the country, they just sacrifice their everything. Some know whether we give them the same respect that they should get. Then come to know the meaning of patriotism and a heart-touching story of some people associated with it. But first, take some information about the author of this lesson, who has written in it very beautiful words. स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। Swayam Prakash was born in 1947 in Indore, Madhya Pradesh. After studying mechanical engineer, Prakash himself, who worked in an industrial establishment, spent a large part of his childhood and job in Rajasthan. At present, after voluntary retirement, he lives in Bhopal and is associated with the editing of Vasudha Patrika. 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय हैं। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। 13 of his story collection have been published in which सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी and संधान are notable. And his बीच में विनय and ईंधन novel have been discussed among them. He has been rewarded with awards like Pahal Samman, Banmali Award, Rajasthan Sahitya Academy Awards, etc. चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। The country is not the name of the land surrounded by borders all around. Patriotism is the name of loving all the citizens, rivers, mountains, trees, plants, animals and birds living in the country and making efforts for their prosperity. The story of Netaji ka Chashma underlined the contribution of crores of citizens of the country through Captain Chashmewala, who contribute in their own way in the building of this country. The story goes that not only adults but children are also involved in this. हलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना,
दो ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगरपालिका भी थी। नगरपालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगरपालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी भी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। The Haldar Sahib had to pass through the town every 15 days in connection with the company's work. The town was not very big. There were only a few houses that could be called a pakka house, and there was only one market that could be called a market. The town also had a boys' school, a girls' school, a small cement factory, two open air cinemas, and a small municipality. If there was a municipality, it used to do something or the other. Sometimes some roads has paved, sometimes some urinals were built, sometimes pigeon umbrellas were made, and sometimes poet conferences were organized. An enthusiastic board or administrative officer of the same municipality once got a marble statue of Netaji Subhash Chandra Bose installed at the main square of the main market of the city. The story is about the same statue but also about a small part of it. पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छी मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय उपापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। The whole thing is not known now, but it seems that due to the lack of knowledge of good sculptors and of the country, and cost of good sculpture is much higher than the estimate and available budget, a lot of time must have been wasted in the letter and the board's rule. At the end of the hour, it would have been decided to give the opportunity to a local artist, and in the end, the only drawing master of the town's only high school, suppose Motilal ji, would have been entrusted with this task, who would make the ideal within a month. They were giving the confidence to Fleming. जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कह सकते हैं बेस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन, फौजी वर्दी में थे। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। As has been said, the ideal was of marble, some 2 feet high, for the tip of the cap to the second button of the coat, which is called bust, and beautiful. Netaji was looking handsome, some innocent and little. Seeing the ideal in military uniform, it used to remember Dilli Chalo and you gave me blood, etc. In this respect, it was a successful and commendable effort. There was only one thing which was knocking on sight. Netaji did not have glasses on his eyes. That is, glasses were there, but marble was not.
Students, listen carefully. The author wants to tell us that the municipality who wanted to progress the country by getting small works done in the town. The same municipality did not show any responsibility in the matter of getting the statue of Netaji. It was just a task for the official for which they had neither money nor time. एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की, लेकिन चश्मा रियल। A normal and real, a white-black frame of glasses was worn on the idol. When Haldar Sahib first passed through this town and stopped to eat betel at the crossroads, he aimed it, and proud smile spread on his face. Wow, this idea is fine too. Statue of stone, but glasses are real. जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। मैं तो मूर्ति के रंग रूप का या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। Even when the jeep left the town, Haldar Sahib kept thinking about this statue and finally came to the conclusion that overall this effort of the citizens of the town should be called commendable. The importance is not of the color, form or stature of the ideal. It is of that feeling. Otherwise, patriotism is also becoming a joke these days. दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाए कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। The second time when Haldar Sahib passed away, he noticed some differences in the ideal. When he looked carefully, it was found that the glasses are second. Earlier, there were square glasses with thick frames. Now, there are round glasses with wire frames. The prodigy of Haldar Sahib increased further. Wow, what is the idea? An ideal cannot change clothes, but can change glasses. तीसरी बार फिर नया चश्मा था। The third time again was the new glasses. हवलदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। Haldar Sahib got into the habit of stopping at the crossroads every time, passing through the town, eating pan and looking carefully at the idol. Once, when the curiosity became uncontrollable, he asked the panwala, "Why, brother? What's up? How does this change your Netaji's glasses?" Every time. पान वाले ने खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था।
वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। The panwala had a pan stuffed in his own mouth. He was a dark, fat and happy man. Hearing the question of Haldar Sahib, he laughed in his eyes. His belly twitched. Turning back, he spit beetle under the shop and showing his red black teeth, said, Captain Chashmewala does it. क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी समझ नहीं पाए। What does it? हवलदार साहब could not understand anything. Changes glasses. पान वाला explained. What do you mean? Why does it change? हवलदार साहब still could not understand. कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। Think someone customer has came. He needs to wide frame. So the captain will bring it from where? So the ideal was given to him and replace the second one on the ideal. Now अब हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसीलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। Now Haldar Sahib understood something. There is a spectacled man whose name is Captain. He finds the ideal of Netaji without glasses bad, rather it hurts, as if Netaji being unconvinced without glasses, so he fits on the statue of Netaji from a select number of frames available in his small shop. But when a customer comes and needs the same frame as the statue, Captain give the frame on the ideal. Probably Chashmewala apologizing to Netaji. So students, I think that now you too will feel good while listening and understanding this unique and patriotic story. According to the story, Haldar Saab, who was a government officer, was also a patriot. So he started feeling a little proud of the people of this town. He felt that even in today's time, there is someone who had respect for the patriots.
He brings it to the customer and later returns the second frame to the Netaji. What is the idea? लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? But man, one thing still did not make sense. Haldar Sahib again asked the panwala, where did Netaji's original glasses go? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोन थिरकी, कत्ते की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। The panwala had stuffed another pan in his mouth. It was afternoon. There was not much crowd at the shop. He again laughed in his eyes. His belly twitched, throwing the cauldron stick. Turning back, he spit down the peak and smiled and said, forget to make the master. पानवाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ। It was a funny thing for Panwala, but astonishing and moving for Haldar Sahab. That is, he was thinking right. The sculptor, Master Motilal, written under the ideal, was indeed the teacher of the town. The poor man must have made a promise to slam the ideal within a month, might have made it too, but how to make transparent glasses in stone, the glass man would not have been able to decide, or tried and failed, or while making some more details, the glasses would have been broken, or some stone glasses would have been made separately and fitted, and it would have gone. Oops. हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर पानवाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मा वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? Haldar Sahib found all this to be very strange and funny. In these thoughts, after paying the money for the last pan, bowing before the Chashmewala's patriotism, he walked towards the jeep, then stopped, turned back, and went to the panwala and asked, is Captain Chashmewala Netaji's companion or a former soldier of Azad Hind Fauj? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। The panwala was eating a new pan. Holding the pan
Holding in his hand 1.5 inches away from his mouth, he looked at Haldar Sahib carefully, then smiled and showed his red and black teeth and smiled and said, "No, sir, what will that lame man go mad in the army? Look, he is coming. You talk to him. Get his picture and print it somewhere." हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गया। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं? क्या यही इसका वास्तविक नाम है? Haldar Sahib did not like to make fun of a patriot like this by the panwala. When he looked back, he was stunned. A very old, weak person, a lame man with a Gandhi cap on his head and black spectacles on his eyes, carrying a small box in one hand and several glasses mounted on a bamboo in the other hand, just come out of a street and now a closed one. He was holding his bamboo with the help of the shop, so not even his poor shop makes rounds. Haldar Sahib was confused and wanted to ask, why is it called Captain? Is this its real name? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। But Panwala had clearly told that now he is not ready to talk about in this anymore. The driver was also getting restless. काम भी था, working too. So students, a panwala who was not only making fun of the neglect of the government officials but was also making fun of such a person, one who paid respect to the ideal of Netaji and fulfilled the deficiency of the ideal. Perhaps Haldar Sahib did not like this thing, but on the other hand, he definitely got the respect for the captain with glasses. हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। हवलदार साहब लेफ्ट इन द जीप। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। For 2 years, Haldar Sahib passed through the town in connection with his work and kept looking at the spectacles changing into Netaji's ideal. कभी गोल चश्मा तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता ज़रूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए। Sometimes there were round glasses, sometimes square, sometimes red, sometimes black, sometimes sunglasses, sometimes go-go glasses with large glasses. To give Haldar Sahib a few moments of joyful and hilarity in that dusty journey. फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था।
उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। Then once it happened that whatever day the pan shop was closed, most of the shops in the intersection were closed. अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। That next time also the ideal did not have spectacles on its eyes. Haldar Saab ate pan and slowly asked the panwala, why brother? What is the matter? Today your Netaji does not have glasses on his eyes. पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। पान वाला got sad. Turning back, he spit down the pan on his mouth and bowing his head, wiping his eyes with the tip of his dhoti. Sad sir, the captain is dead. और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। सब कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। Haldar Saab stood silently for a few moments. Then after paying the pan money, sat in the jeep and left. बार बार सोचते, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। Thinking again and again, what will happen to that nation which laughs even at those who give everything, home, household, youth, life, for the sake of their country, and find opportunities to sell for themselves. Got sad. Students, we will read the last line of this paragraph once again. In these lines, the author wants to say that in today's time people have the lack patriotism, but there is no shortage of such people who harm the country for their selfishness and also do not care about the lives of those soldiers. Those who take oath to sacrifice their lives for their country. पंद्रह दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा, आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। "15 days later passed through the same town again. Before entering the town, he realized that Subhash statue must be installed in the heart of the town, but there will be no spectacles on the eyes, because the master forgot to make and the captain died. Thought, I will not stay there. Today I will
not even eat beetle. I will not even look at the ideal. I will leave straight away. Told the driver, do not stop at the crossroad. Today there is a lot of work. We will eat pan somewhere in the on the road. But लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। But out of habit, the eyes turned towards the ideal. As soon as the intersection came, saw something that screamed stop. The jeep was in speed. The driver slammed the brakes hard. People started watching on the way. While the jeep did not stop, Haldar Sahib jumped out of the jeep, rushed towards the ideal with rapid steps and stood in attention right in front of it. मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। A small spectacle made a reeds was placed on the eyes of the ideal, as children make. Haldar Sahib is an emotional man. His eyes filled with tears at this point. Seeing the spectacles, students, seeing the spectacles made the reeds of the statue of Netaji. There was a strange feeling of patriotism because there was no big man who made those glasses, perhaps a child, and he realized that still in this country, the people who love the country and the patriots are respected. There is no dearth of those who gives a lot. This message is being given to us by the author from this lesson that we also have love to our country as much as we do to our family and always protect it like a protector. Jai Hind.